सारा ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। ये एक स्पेशल एपिसोड है, नॉर्मल हमारे सीजन्स में नहीं है। एज यू माइट नो, वी आर ऑन अ ब्रेक राइट नाउ, और हमारा जो नया सीज़न है इट्स गोइंग टू बी कमिंग आउट वेरी वेरी सून, मैक्सिमम इन अ कपल ऑफ वीक्स, प्रॉब्ली अर्लियर। और उस स्टूडियो के आजकल कंस्ट्रक्शन चल रही है, सो वी आर इन अ मेक शिफ्ट स्टूडियो बिकॉज वी हैड अ वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस टुडे, एंड आई थॉट यू नो आई रियली नीड टू हैव दिस कॉन्वर्सेशन विद अस टुडे इज आसिफ अजीज. ही इज़ द चीफ कमर्शियल ऑफिसर ऑफ जैज़, विच इज़ पाकिस्तान's largest, I mean, अब मैं क्या कहूँ, telecom company, data company, there's just so much happening there. Aziz bhai, Asif bhai, thank you so much for being part of the show. Thank you so much for having me here. So, digital company. Digital company. That's all of everything then. Yes. I'm going to start the conversation normally जिस तरह मैं करता हूँ, just trying to understand a little bit about where were you born and what was early life like for you. Thank you so much. So, from my accent, you can maybe guess a little bit. I was born and raised in London. My parents emigrated very early on, and I was privileged enough to have a good education from a British school, and I spent all my early years in London. My parents, my sisters and everything, we all lived in London together. My schooling, my first jobs, everything happened there. Were your parents the first time immigrants to the UK? They were first time immigrants to the UK. I think they would have, my parents moved late 50s. Wow, really? Very early, yes. My father said he didn't shave when he came. And how, like, I mean, 50s में तो कोई इंटरनेट तो था नहीं कि यार UK एक जगह है वहाँ जाते हैं. What was the thought? I mean, if they've told you. No, I asked my father this. So I think, first of all, he didn't have a passport. Okay. So he had to go to Karachi. They went by train to Karachi to get a passport. And what was he doing in Pakistan at the time? School. Okay. I think he was 14. Yeah, Achha. 14, I think 14, 13. So then he got on a plane. He went with his taya, effectively. Right. And so my grandfather's elder brother, he went with him. And I think थोड़े शरारती से थे. So my grandfather maybe asked him to go to London. And then he went to school. And कहते हैं कि उस वक्त the plane didn't go all the way direct. It stopped. He remembers this. It stopped in Geneva to refuel. And then it went on to London. Right. And then he went to school in London. I see. And then school के बाद फिर he stayed there and... Yeah, he stayed there. He didn't come back. And I think the first time he said he came back was like maybe 14, 13 years after he'd already gone. So then he came back to get married. Wow. And then, so he said he didn't come for like 13 years. Interesting. And so you guys growing up would have had a very different sort of UK experience, because I believe वहाँ पे ज़्यादा उस time पे देसी community और Muslim community generally नहीं होगी. It was very small. तो बहुत छोटी सी थी, especially जिस शहर में हम थे वहाँ पे तो suburbs था लंदन का, और भी कम थे. So जो थे बहुत close थे. Right. Because you were so few of you, they were little close-knit communities. And most of them were his friends and growing up. And then a lot of other people emigrated. And it was... How do you see UK having evolved over the last so many years, so many decades, I would say? Oh, it's just changed phenomenally. Actually, multiculturalism is rife, and which brings tensions. Right. So what's happened most recently has been racial tensions have been high. And they have started, I would say, since the war on terror. Right. That whole branding, I think, demonized the Muslim communities. And as a result of them being demonized, they became more ostracized. Right. And in that... reactive था वो. So they became more insular. Right. In order to preserve their identity. Mm-hmm. So I think this has fueled it. What they need is more dialogue and more embracing and more celebration of people's individuality. So what I find in the UK now is a very divisive, but on the face of it, it's very multicultural. Yeah, I mean, they have a Pakistani mayor and an Indian prime minister. Yeah, so that helps. Right. And I think they need more of that. And I think they need less rhetoric around all Muslims are terrorists. And I think, and I will be honest with you, every time I hear of a bomb blast, my heart sinks. कि वो क्या खबर में आएगा कि it was a Muslim guy from Pakistan who did this. And then what happens is, as you see it in the media, it was a mentally disturbed white guy who had a bad childhood.
Yeah, makes sense. I feel like, I mean, there's so many other things happening in the world as well. Personally, मेरा outlook ये है कि I'm hoping, and I read a book maybe a decade ago, जिसने भी ये predict किया था कि I'm hoping कि अब ये वाली चीज़ जो है वो downward spiral पे है, and hopefully we're going to see a bit more peaceful world going forward. Honestly, we have enough problems to deal with. This should be the last of our issues. And unfortunately, you're right. But I read another book very recently which said the opposite. In fact, it's becoming more divisive. And if you look at France and you look at Denmark and Netherlands, it's what's been happening there. Yeah. Unfortunately, extremism exists on all spectrums. And you think that's growing also? And I think, yes, it's being fueled. Hatred only breeds more hatred. Right. You've got to be able to tolerate people and respect people's individuality. And I think that tolerance level is what needs to come back. Makes sense. Asif bhai, so thoda sa main sort of loop back karunga. Tell me a bit about your education. UK se hi aapne li, high school and university? Yeah, so UK ke schools the, UK ke universities thi. I did my A-levels from the UK, O-levels, 10 O-levels. I don't remember the grades. I did 3 A-levels and then I went to university in the UK, again a London university. What program? So I did business studies. Okay. So I did business studies undergraduate. And then after that, I did some marketing diplomas as well. So Chartered Institute of Marketing, Chartered Institute of Market Researchers. So I did a lot of postgraduate type studies, all in the field of marketing. And then eventually I moved on and did an MBA. I did an MBA from a very small private management college called Ashridge. Okay. It was really beautiful, right? If you ever visit London, you have to visit this. It looks like it was an old house, an old manor house. It's beautiful, like 50 acres of land. It actually used to be King Henry VIII's hunting lodge. अच्छा. Yeah, and somebody turned it into a management college in the 50s. और ये बड़ा sort of boutique सा था. बहुत boutique सा था. थोड़ी सी लोग input होंगे और उनके ऊपर ज़रा exclusively काम होगा. जी. Class सिर्फ 30 students की थी. Right. And वो जो है ना पुराने mahogany floors और ये कुछ बड़े fireplaces, ये कुछ था. It looked really beautiful and I fell in love with it and I did my MBA there. And now since then they have been acquired by Hult, right? The management Hult Management School. Right. I'm not sure where they're based from. I think it's Netherlands. And they bought it and they still run it. They still run the MBA from there. Right. I did my MBA from there. Interesting. Why did you choose marketing and management and business studies overall? Was this a random decision? क्या ठीक है चलो कुछ करना है तो ये कर लेते हैं? No, growing up, my father was a professional, but he was also very entrepreneurial. He would start up businesses, and I would get very involved. Sometimes it would be apparel, sometimes it would be a stream of shops, sometimes it would be something to do with care homes, and I was just fascinated watching him in the business world, and I just thought, let me study this. Initially, I started with accounting, but I found accounting too limiting. It was just very one discipline focus. So then I transferred to business studies. And what about your first job? I mean, did you ever dabble into your dad's businesses or did you? No, he didn't let me. My father was a very big believer that better you need to study. And he would not let me come anywhere near his businesses. Maybe a good thing. But my father was very disciplined. Beta, nothing is more important for me. तुम इस मुल्क में आए हो, मैं इस मुल्क में आया हूँ. Nothing is more important that you get the best of educations possible. And that went for my sisters as well. Right. So he was a very big believer of academia and studying and being very studious. So isliye I did what the honorable thing was. I went into a bank and I worked for HSBC Bank. Right. Which is a Hong Kong bank. This was 70s or 80s? So 90s. Oh, early 90s. Yeah. How was the banking sector at the time? Very underdeveloped. It was great. Right? Banks बंद हो जाते थे 3 बजे. अच्छा. शाम की चाय and then रात को 9 बजे you're in bed. Yeah, that was good. So if I were to ask you, 3 p.m. का वो ख़त्म होने वाला टाइम, and I know jazz. I know कि वहाँ पर तो weekends भी नहीं है और वहाँ पर तो there is always something happening. It's very exciting.
Did you ever imagine कि आप एज अ अपने 20s के अंदर इतने चिल में होंगे और अपने 50s के अंदर जो है इतने एग्रेसिवली? So actually मैं अभी तक अपने फादर को कहता हूँ, वो कहते थे बेटा थोड़ा सा काम कर लेना फिर आराम से तुमने दफ्तर में बैठना है. वो दिन गए, and this is true, and this is very true. However, this is a beautiful time because हमारी businesses ना बहुत जल्दी evolve हो रही हैं. When I first job launch करूँगा कोई चीज़, कई महीने लग जाएंगे बनाते बनाते, टेस्ट करते करते, मेमोज भेज रहे हैं, जवाब नहीं आ रहा. I can come up with an idea on Monday, build it on Tuesday, launch it on Wednesday, review it on Thursday, kill it on Friday because it didn't work. Yeah. You couldn't do that 25 years ago. Makes and sense. That's the beauty of now compared to then. And how long were you in banking? For about 5 years. Right. And then I moved to a startup, maverick startup called Orange. The telecom company. Yes. So And in the bank, were you in the sort of investment side, or were you I was initially, so it was a management training program. So I did a number of roles and rotations, but it was all in retail banking, whether it be trade finance, shipping finance, international finance, retail finance. And 90s in banking is like a short career, right? So what made you decide कि यार banking छोड़ते हैं, टेलीकॉम का कुछ सुनने में आ रहा, क्योंकि साफ सी बात है सुनने में ही वाला हिसाब है ना. उस वक्त ना ऑरेंज के पास 3 लाख कस्टमर थे सिर्फ जब मैंने ज्वाइन किया. And did you imagine the world to be the way that it is today? No way. In fact, I want to find the guy that said I had the vision to launch mobile telephony because I knew it would become ubiquitous. Doesn't exist. It was मेरे अपने business plan में 98 में we were going to have 1 million customers. और आज आप दुनिया देखें. Yeah, you Insane. know. So what happened was मुझे एक on the rotations with HSBC, I had a rotation in marketing. And I was working on the rebrand of HSBC. So the name HSBC, we were called Hong Kong Bank. Right. And this is 97. Hong Kong was being returned to China. Right. And the bank was in the UK. And this was a very dangerous time for British people to be known as Hong Kong Bank. Right. So we had to come up with a new name. But the owners of Hong Kong Bank liked the name. They loved it. So we called it HSBC. Right. Hong Kong Bank, Hong Kong and Shanghai Banking Corporation. And I was involved in the rebrand. And I was managing the global rebrand. And I met the chief marketing officer of Orange at a brand conference, of all places. And I said, you provide these walkie-talkies. I like them. I don't know what they do. And I love your brand. Can I have a job? Achha, so you asked him for this. And so what was the thought behind that? I was being asked to move back to Hong Kong to work in trade finance. And you were done with that? I was done with that. I thought this marketing world, this branding world is exciting. And it's exciting. And it's interesting because 98 में उसके बाद वो financial crisis आया है. Oh yeah. A lot happened there. So Allah Ta'ala it sort of worked out for you. So I moved to Orange, I think 96, 97. 96, maybe 97, something like that. And then how long were you there for? So I was at Orange pretty much then for a long time. I left them once and I joined a broadband provider. मैंने सोचा I've worked in mobile. चलो देखते हैं broadband की business क्या है. Which was the landline, so the DSL lines होती है ना. मैंने सोचा ये क्या है दुनिया. So I moved to a landline business, which then Orange acquired. So you're back into Orange. So then I'm back into Orange. So I think I was at Orange 5 years and I left for 4 years and I got reacquired. Right. Then I ended up back in Orange. And I didn't leave Orange until 2010, I think, or 11. So 14, 15 years. Yeah. And before Orange, I believe British Telecom था? So या और भी players थे? नहीं, so BT Cellnet भी था, Vodafone भी था और एक और था 1-to-1. ये सब बिक चुके हैं. T-Mobile हो गया 1-to-1, BT Cellnet, I think. हाँ, वो O2. Right. So ये सारे थे, but ये सारे नए इस वक्त ये सब नहीं थे, किसी को भी नहीं पता था ये क्या चीज़ होएगी. हमारे माइंड में नहीं था कि 10 मिलियन कस्टमर्स हमारे आ जाएंगे अगले 2 साल में. बिजनेस प्लान वाले ना अंदर रूम में बैठे हुए कंप्यूटर्स के ऊपर बना रहे हैं प्लान कि इंशाल्लाह अगले 2 साल में हम 2 मिलियन कस्टमर कर लेंगे.
मैं कह रहा हूँ बेटा हम ऑलरेडी 2 मिलियन पे आ गए हैं। वो फिर वापस रूम में जा रहे हैं, कह रहे हैं कि नहीं 2.5 मिलियन। मैंने कहा हम ऑलरेडी 3 मिलियन पे हैं। So it was a time of astronomical growth. Yeah. Have you seen such growth in other industries when you've studied them? Or So the jo app wali dunya hai is pretty similar, right? So how Facebook grew like fire, how TikTok, how naye apps aate hain and grow karte hain. And I have to say though, I do respect businesses that have been around for 2 generations. Because jo banks hai na, they're still here. yeah, They've seen tough times, they've seen good times. right, इस वक्त tough times आ रहे हैं some apps के लिए. right. And unfortunately for some of these app businesses, they're a little bit fashion focused. Yeah, They're fads. Is waqt, I know it's different in this country, but in most of Western Europe, nobody opens a Facebook account. Not anymore. really. Yeah. Is that an age problem? Correct. So how do you now attract the next segment? Because Facebook is where my father posts pictures of my baby. I wouldn't be seen dead on. My children are not on Facebook. And I don't think they will join Facebook. But ये growth यहाँ पे नहीं है because we're a little bit further behind this Curve, curve. yeah. We're much further behind. So यहाँ पे ये अभी growth है. Interesting. So for some of these businesses, emerging markets जहाँ पे हम इस वक्त बैठे हुए हैं, they are prime. This is rich territory for investors. Interesting. And so 2014, agar if I were to ask you to quickly tell me the roles that you were in at Orange over 14 years. So I was mainly in marketing, product management, marketing, rising to marketing director, looking at the brand, looking at products, pricing, propositions, developing the new tariffs, and developing the new marketing programs, retention. ये कुछ कर रहा था. All in the UK? All in, mostly in the UK, a little bit in France as well. So then we got bought by France Telecom. Right. And then I was spending a lot of time in France as well. And I lived in France. How for was France? It's the most beautiful country. Really? It is. It's different to the rest of. It's different to UK. In fact, actually, UK is different to the rest of Europe. Acha, all of the rest of Europe. Yeah, UK is very different. Interesting. UK is not Europe. इसलिए निकल गए. सही है. So 14 years at Orange and then you decide कि यार अच्छा बस हो गई है. मैं Actually, अपने ये मसला क्या हुआ था ना कि उधर growth नहीं आ रही थी. ठीक है. Growth हो रही थी 1%, 2%, and I wanted to move to emerging markets. I actually applied for a job to a company that was based in Africa, but because it's difficult to live in Africa, they allowed me to live in Dubai ठीक है. and commute, Right. which was tough because I was commuting for 2 weeks, 3 weeks at a time, and I was living in West Africa. So I lived in countries that maybe you've never heard of, but they're real countries. I lived in Mauritania, which is West Africa, a big desert, Okay. huge gold mines. I lived in Senegal. Senegal were in the World Cup, so Yeah, everybody knows them. Yeah. I lived in Guinea, Right. and I lived in Sudan. Guinea, the Papua New Guinea? So Guinea Conakry. It's Or in is that a West- separate country that's a altogether? separate- So there's Guinea Conakry, Right. there's Papua New Guinea, Right. and there's Guinea Bissau. Oh, interesting. Yeah. What's Africa like? I mean, Africa is Again- very underdeveloped. बड़ा कंफ्यूजिंग सा होता है बिकॉज मेरे दिमाग में कभी अफ्रीका की इमेज आती है तो रेगिस्तान आते हैं, कभी अफ्रीका की इमेज आती है तो खूबसूरत फॉरेस्ट्स आते हैं, कभी अफ्रीका की इमेज आती है तो बहुत सारे जानवर आते हैं. एंड आई नो दैट इट्स अ ह्यूज लैंड एंड आई फील लाइक ये मेरी गलती है. नहीं, आई डोंट इवन नो द actually, नेम. मैं सच बताऊं, मेरी जो ओपिनियन है, जो वर्ल्ड के मैप्स बनाए गए हैं ना, वो डिसप्रपोर्शनेट हैं, वो अफ्रीका को सही नहीं दिखाते. मैं एग्जांपल दे देता हूँ. मेरी फ़्लाइट सेनेगल, दुबई से लेकर सेनेगल 12 घंटे की फ़्लाइट थी, अच्छा. पर लेकिन मेरी फ़्लाइट लंदन की सिर्फ 7 घंटे की है. हालांकि लंदन कितना दूर दिखता है दुबई से. करेक्ट. तो ये जो है ना मैप्स, ये डिसप्रपोर्शनली बनाए गए हैं. अफ्रीका की जो कॉन्टिनेंट है ना, बहुत बड़ी है. सो लिटरली ऊपर का सारा हिस्सा एब्सोल्युटली रेगिस्तान है. मैं खुद है. देख चुका हूँ. कुछ और नहीं कोई इकोनॉमी नहीं है, कोई कुछ भी economy. नहीं है. Mines माइनिंग है, ठीक है. पर लेकिन प्योर रेगिस्तान. फिर वो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और इक्वेटर आता है ना, वो प्योर Forest है. फॉरेस्ट्स. अच्छा, डेजर्ट से सीधा फॉरेस्ट. डेजर्ट से सीधा फॉरेस्ट. अच्छा. और बारिशें बारिशें. बेहतरीन मौसम. या और ट्रॉपिकल वेदर. और ये कौन से कंट्रीज आएंगी? अच्छा, ऊपर केनिया. हाँ, केनिया, कॉन्गो, बुरुंडी, अंगोला, ये जो है नाइजीरिया, गाना,
ये जो सारी बेल्ट है ना, ये मिडल में बेल्ट है. सही है. तो और इसमें हमने देखा कि गाना की भी ग्रोथ हमने सुनने में आई. नाइजीरिया बहुत रैपिडली ग्रो कर रहा है. तो यहाँ पर हमें एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई है. अभी इमर्जिंग मार्केट्स की आना शुरू हुई है. यस यस. तो यहाँ पे ना एक तो एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा है. ठीक है. लैंड मैस भी काफ़ी है एंड पॉपुलेशन भी ग्रो कर रहा है. प्लस यहाँ और एजुकेट भी हो रही है पॉपुलेशन. एजुकेट भी हो रही है और मिनरल्स भी हैं इधर. राइट. एंड देन नीचे क्या है? साउथ अफ्रीका साइड के. साउथ अफ्रीका की साइड पे वो सारे जिम्बाब्वे, रवांडा और साउथ अफ्रीका की ये कंट्रीज आ जाती हैं. यहाँ पे मैंने कम ट्रैवल की है. मैंने ज़्यादा ट्रैवल की है सब सहारन अफ्रीका में. Which is the so Mauritania and so मैं बता सकता हूँ वेस्टर्न सहारा, Mauritania, Mali. I've been to Timbuktu. अच्छा. It's a real place. कहते ना कि मैं गया हूँ Timbuktu. It's a real place. I've been to Timbuktu. So Mali, Niger, Chad, Sudan. Are there a lot of sort of Desi people in these countries? बहुत कम. Actually, Indians, Pakistanis, so Bengalis. No, actually एक अजीब बात है. मैं सूडान में था और जिस होटल में ठहरा हुआ था ना, मैं बहुत अपसेट होके बैठ के उनके खाने खा रहा था. तो शेफ़ निकल आया. अच्छा. शेफ़ पाकिस्तानी था. अच्छा. तो वो मेरे वास्ते, मैंने कहा यार मुझे आलू गोभी चाहिए. मुझे आज दाल चावल चाहिए. मुझे आज मुर्ग मसाला चाहिए. मुझे आज तू देसी चिकन बना. और से बना के दिया उसने. वो सिर्फ मेरे लिए बनाता था. अरे वाह. तो कभी कभी मिल जाते हैं एंड बड़ी खुशी होती है जब मिलते हैं. सो यस है पर लेकिन कम. So a couple of questions. First, I was speaking to Abdul Razak Dawood recently. You know, he was the former commerce minister as well, and he was very bullish on Africa. And his thought process was that while this is the century of Asia at large, and हम देखेंगे कि वो एक shift हमें Asia में sort of developed economy शायद over the by the end of the century नज़र आना शुरू हो. Definitely हमें scale तो नज़र आना शुरू हो गया by proxy of China and India and even Middle East. बट वो कह रहे हैं कि जो सबसे मज़ेदार टाइम आने वाला है वो अफ्रीका का आने वाला है. एंड यू नो ही वाज लाइक कि सब बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है इवन फॉर पाकिस्तानीज. डू यू थिंक सो कि मे बी नॉट द एंटायर अफ्रीका? हमने वो तमाम सुना है, मूवीज़ भी देखी हैं फड्डों की, जंगों की. 2020 के बाद हमने देखा वहाँ पे कूज भी हुए और बहुत अनसर्टनिटी भी आई. लेकिन जो हम सुन रहे हैं अबाउट साउथ अफ्रीका, अबाउट नाइजीरिया, अबाउट केनिया, अबाउट a lot of this Chinese infrastructure coming in and educated youth and M-Pesa and all of these stories, right? Do you really see कि अफ्रीका में कुछ बड़ा इंटरेस्टिंग हो रहा है? जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है अक्सर जब लोग देखते हैं अफ्रीका को, वो उसको एक नज़र से देखते हैं. बिगेस्ट मिस्टेक पॉसिबल. Countries share borders, yet they share no identity with each other. पर लेकिन उनका border है. That is no different. That is no different to Europe. Yeah. Germany shares borders with Poland, but it is very different. Yeah. Totally different language. And languages बिल्कुल फ़र्क हैं. Languages भी फ़र्क हैं. Cultures भी फ़र्क हैं. I lived in Senegal. Senegal के बीच में एक slither है Gambia का. Right. Gambia is totally different to Senegal. अच्छा. Gambia speaks English. अच्छा. Senegal speaks French. और ethnicities का भी फ़र्क है? Ethnicities में similarities आती हैं, right. but लेकिन unfortunately cultural dilution है because of evolution and the way the culture is evolved, language evolved हुई है, तो थोड़ी सी dilution है. So if you don't look at Africa as one continent, but you look at it as clusters, then you can begin to find opportunities there. Lots of opportunities. वही बड़ी बात है, segmentation की game है सारी. Segmentation की ज़रूरत है, marketeer हो ना. Right, makes sense. And then the second question, when you moved to Dubai, did your family move with you? Yes, my family moved. And my assumption is your kids were somewhere middle-aged, middle school. वो middle school में थे, yes, beginning में. And that's the toughest time to make a switch, right? Yeah. Like they're now the third generation British. Yes. They're moving to Dubai, and their dad is continuously traveling to Africa. So how was that like for the family? Actually, so that was a very tough time, and I didn't appreciate that time that it had and the impact on my family. And this is the reason I then moved to Pakistan, because the job was based in Pakistan. I'll talk about that separately. My family did enjoy Dubai though, because Dubai lifestyle is very easy. हमने कभी दौड़ नहीं लॉक की, गाड़ी भी नहीं लॉक थी, बच्चों की साइकिलें नीचे पड़ी हुई थी. So there was never, so this was fine. So I never traveled ever worrying that I have to worry about my children or my wife. There was never a problem. So this was safe, and she was independent, she could drive, and there was no issue at all.
However, as a father, you need to be present, not just in mind, but physically as well. Yeah. At times in their upbringing. So that after I think maybe almost 4.5, 5 years, we made the switch from Dubai in I think 2015 to Pakistan. And do you think your relationship, when you switched and you sort of were there fully available, do you think that relationship you were able to recover that? I'll give context to why I'm asking this. मेरा life में ये dilemma चल रहा है. You know, I'm in the middle of a transition where I might have to leave my child and he's going to be 2 inshallah in March. और मेरी आजकल रातें यही होती हैं कि यार how am I gonna not be there for a month straight or 2 weeks straight and miss all those milestones and miss all those. And maybe पिछले दिनों I was there in Karachi as a matter of fact with Jazz. And I had a great time, you know, but वो जब 5 दिन के बाद वापस आया हूँ ना तो मैंने देखा suddenly he's shy. And he's just like वो 2 दिन उसको लगे कि who is this and you know और उससे पहले we were very वो तो मुझे आजकल बड़ा वो हो रहा है मुझे डर है कि So yes, you're right, and this doesn't help. And मैंने ये conscious decision ली थी at that time that I won't travel anymore because what I couldn't handle, and this is a personal thing now, right? शायद मेरी कोई बेटी गलत कर रही हो I didn't want to lose my right to be able to put her on a straight path. Because वो कह देगी, Father, you were never there. You were never there, yeah. You were never there. What do you know what's going on in my life? So I made that conscious decision. It was possible to do it when they're younger. But it is harder when they get between 10 and 15. वो जो teenage वाले सही वो जो time साल आता होता है ना, because actually now I have that and that becomes harder. Then you have to be more present. You can't be distant or absent. So it wasn't easy. Believe me, there were times where I would be sitting in my apartment and wondering, why am I doing this? Yeah. For some all the interesting work and the money in the world and I'm losing out on something. Why am I doing this? Yeah. But so you have to make the most of it. Yeah. So I played more golf, I did more exercise, more fitness, more running, more other things. So you have to make the most of it in order to justify in your own mind the absence is worth it beyond the monetary value. Makes sense. And so in 2014 you moved to Dubai and my understanding is in 2010. 10, right. And then in 15 I moved to Pakistan. Okay, so 5 years you were doing this. Yes. Pakistan ka switch kaise aaya? Did you get an offer from Pakistan or did you actively? Actually, this is a funny story. I got a message on LinkedIn. Right. This guy wants to meet you over the phone. I said, okay. I was in Senegal. First meeting I held in Dubai. Second meeting I was in Senegal. I had traveled. So it was all on video. And then before I knew it, I got a job offer. Right. I thought, यार इनकी बड़ी high risk profile है. उन्होंने मुझसे मिले भी नहीं और मुझे job भी offer कर दी. मैंने कहा मेरी ज़्यादा high risk है. मैं accept करता हूँ. Then I had that remorse, buyer's remorse जो होता है ना. मैं तो कभी पाकिस्तान आया ही नहीं हूँ. And honestly, I couldn't speak Urdu at that time. अच्छा. No, I couldn't. I still struggle, as you know. मुझे बिल्कुल उर्दू नहीं आती थी उस वक्त. But you could understand it. I could understand it. I could understand it. It was a language that I had heard. Right. But it wasn't a language. So my sisters. Fluency zero थी. Yeah, मैं अपनी sisters हम तो English बोलेंगे. मैं friends, cousins, हम सब English में बात करेंगे. कभी उर्दू में नहीं. It's not possible. Even my parents is 50-50 English Urdu. Acha. Oh God. Because your father was what 14, yeah, right? So that's so it's almost my father will be speaking to me in English. So so then I thought, oh my God, मैंने क्या किया? मैंने तो सुना हुआ यहाँ पे तो मुल्क के हालात कुछ अच्छे नहीं है. मैं क्या कर रहा हूँ? Had you visited Pakistan before? To get married. That's it? Yeah, I had. So you had no idea. You had that stereotypical vision of Pakistan also. Yeah, I had no idea. In fact, my father forced me to get a CNIC card. And मैं बहुत upset था कि यार मेरे पैसे waste किए हैं. What do I need this ID card for? Right. The best thing I ever did. Achha. So Pakistan, this was Jazz basically? Yes. And who was the one who interviewed you? My boss, Amir Ibrahim, Achha. current CEO. Very cool. And what was the position at the time? So I came to join as Vice President of Marketing. Right. This was 2015, right? 2015, yes. And so उस वक्त से लेके अब तक का थोड़ा सा अगर मुझे समराइज करके बताएं what's been your journey like at Jazz? So I was Vice President for Marketing for about just under a year, and then I was elevated to Chief Commercial Officer
Acha. which marketing reports into me. And then I had the whole commercial arena underneath my area. So this is for a lot of people when they see CEO, एक sort of mind map बन जाता है कि क्या रोल होगा. COO का भी mind map बन जाता है. CCO or Chief Commercial Officer for an average consumer is a relatively rare sort of title. And so tell me a little bit about. So it's all customer orientation. So so from imagine customer को शुरू से लेके जिस दिन उसने सिम खरीदी है till the end, वो फिर हमारी responsibility बन जाती है ना. So I'm responsible for bringing the customer in, ensuring they use it, and then ensuring they get support. So customer care, so सारी customer care, सारी sales functions, सारी marketing functions, यहाँ तक कि even network की roll out के ऊपर भी, because technology के है कि मैं कहाँ network लगाऊँ. Right. तो वो मुझे बताना पड़ता है ना, based on customer feedback, इधर network कमज़ोर है, इधर population बढ़ रहा है, इधर demand ज़्यादा है, तो network इधर लगाएं. So then evolution. So 2G था, जब मैं आया उस वक्त हमारे पास सिर्फ 3G था और वो भी अभी नया आया था. Then we evolved to 4G. So 4G launch की हमने. And then उसके बाद अब हम अपने apps जो launch करते हैं. So any customer activity, मोटा साहब है, from beginning to the end is what I help to look after. And do you guys have a CMO position as well at Jazz, or is that part of the same so position? That's the vice president of marketing that reports. Right. So it's the CCO is CMO plus a lot of other functions sort of clubbed together. So the sales, customer care. अच्छा, सारी चीज़ें. Interesting. And आपने अभी बोला कि जिस तरह कि किधर expand करना है, किधर वो करना है, तो a lot of the sort of unit economic decisions वो भी आपके पास होते हैं. Are you also figuring out कि okay? जी क्योंकि हर चीज़ का business case होना पड़ता है ना. So I need to understand कि कितने customers इस area के अंदर हैं, हम कितना grow कर सकते हैं, and कितना लगाना चाहिए. Makes sense. Telecom generally overall, अगर मैं दुनिया में भी देखूँ तो has had a tough time recently. Early 2010s में I was seeing कि telecom, particularly in the West, was really actively trying to enter the new age, with the AT&Ts of the world and the, Verizon, I believe, bought Yahoo, and then AT&T bought a bunch of these media companies, and there was a lot of that happening. They had the muscle, definitely, and they were definitely giants, huge giants at the time, but उसमें कुछ success stories भी आई, काफ़ी सारी बहुत बड़े failures भी आए. And so it hasn't been easy, the figuring out कि how do we evolve into the next stage of evolution. If I talk about your journey and the journey of your brand, how have you guys evolved into the 5G world, the world where the human experience on digital is supreme and everything else comes second? Good, very good. Thank you so much. I'm really glad because this links back to my original thing. जो मैंने कहा ना मैं बैंक में काम किया था, उसको मेमो भेजना था, उसने फिर मेमो पढ़ा, फिर जवाब दी, 5 दिन लग गए. So business was slower. अब हुआ क्या है? Literally business is instant. Right. But लेकिन वो जो लाइफ साइकिल थी ना पहले बहुत थोड़ी लंबी थी, वो लाइफ साइकिल श्रिंक हो गई हैं. Right. तो इसकी वजह से ना हमें भी ना उस स्पीड पे ना दौड़ना पड़ता है. Right. So we have to be as productive and progressive. And what does that mean? That means we need to innovate constantly. And innovation isn't just कि हमने नया प्रोडक्ट निकाल दिया. Innovate the way we do things. Innovate our channel. Innovate our processes. Innovate our thinking. I'll give you some very simple examples of what I call innovation here. Innovation can come in, merge करके content page लो. Right. No, that's not necessarily the only innovation. Innovation can also come in other areas के तुम recharge अपने जो हमारा Jazz Cash है उससे recharge करवा लो. So Jazz Cash is an innovation. I first worked in this area in Africa. Africa में मैंने देखा किया था. So M-Pesa का तो सुना हुआ है. So we copied M-Pesa as well. हमने क्या देखा? मैं शॉप पे जा रहा हूँ तो जो था ना उधर इंडिविजुअल अपनी ब्रेड खरीदने के लिए ना वो बैलेंस ट्रांसफ़र कर रहा था शॉप वाले को. I thought this is interesting. I asked the customer, why have you got a balance to transfer? वो कह रहा था कैश होएगा ना तो कैश मेरा लॉस्ट हो जाएगा. ये सेफ है.
And I thought that's interesting. Then what I also observed, especially in places like Senegal, and ये जो सारी छोटे छोटे मुल्क हैं ना, लोग ना अक्सर ना दूर दूर गांव में रहते हैं. And they travel to the city on Monday morning to work. And then on Tuesday evening, और वो बाहर ही सो जाते हैं. And on Tuesday evening, वो नाइट बस लेके वापस गांव जाते हैं, वो जो पैसे कमाए ना मंडे ट्यूसडे देने के लिए. आई थॉट क्यों ना हम इनको फैसिलिटेट कर दें कि यहाँ से बैलेंस वो उधर ट्रांसफ़र कर दो. Hence the birth of mobile wallets. Right. That's how mobile wallets came into existence. And then this guy now no longer needs to spend money on Tuesday night to go back to his village. He can just send the money immediately. हमारा पूरा network है. हम उसको allow कर सकते हैं, enable कर सकते हैं. So this is what we realize. So what you have to now do is you cannot keep doing the same thing you did every day. We must do things differently. So yes, जब मैंने कहा कि हम 3G थी, उस वक्त 4G बिल्कुल नहीं आया था, बहुत कम था. Great, now we have more than 50% of our customers on 4G. Right. ये सब पिछले 3 साल में आए, 4 साल में आए. तब से क्या हुआ है? बिजनेस इनेबल हो गई है. सब हर बंदे के हाथ के ऊपर इंफॉर्मेशन है, न्यूज़ है, वेदर है, क्रिकेट का स्कोर है, कि सब चीज़ अपने हाथ में आ गई है. सो अब व्हाट्स नेक्स्ट? And this is the most pertinent and relevant thing. We have to go where our customers are. Customers अब क्या कर रहे हैं? उनके पास टाइम आ गया. अब उनके टाइम को हम कैसे ज़्यादा सपोर्ट दे सकते हैं, वो और क्या क्या कर सकते हैं अपने टाइम के साथ. So this is all the business we're in. We must answer, what business are we in? Every business has to answer that. No business can say, nobody buys a lawnmower. They want grass that's freshly cut and short. Lawnmower is the enabler. Yeah. I am the enabler of making people's dreams come true. Talking about that enablement, आपने फिनटेक की भी बात की on some level. मैं उसमें डेटा की भी बात करता हूँ. Data in terms of internet, right? In Pakistan, while we've been able to enable some of these things to happen, unfortunately, the evolution hasn't been fast enough. दोनों केसेस में मैं बात करता हूँ कि जहाँ पर हमने इंडिया और चाइना और टू सम एक्सटेंट अफ्रीका को भी देखा कि वो बड़े प्रोग्रेसिव थे इन टर्म्स ऑफ डिजिटाइजिंग देयर करेंसीज एंड QR पेमेंट्स एंड कैशलेस इकोनॉमीज़. वहाँ पर हमने पाकिस्तान में देखा कि ओवरऑल प्लेयर्स एग्जिस्ट करते थे, बट वो जो अपटेक थी ना और वो जो यूज़ केसेस थे वो उस लेवल पे नहीं गए. वो मैक्सिमम ये हुआ कि यार मोटा मोटा अपने शहर से गांव भिजवा दिया, गांव से शहर भिजवा दिया, बंदे से बंदा कर दिया, बट वो आखिर में कैश आउट करेगा और वो कैश पे ही घुमाएगा रादर दैन कि वो इकोसिस्टम डेवलप हो सके. तो अगेन अपटेक हमने वो नहीं देखी. इंटरनेट की भी जब हम बात करें तो हमने ओरिजिनली 2013 फॉरवर्ड जब 3G आया एंड देन इवेंचुअली 4G भी आया तो वी गॉट सम रियली गुड नंबर्स, 50 मिलियन, 60 मिलियन. अब तो कहते हैं जी 90 मिलियन पे खड़ा हुआ है इस वक्त कनेक्टिविटी का नंबर. बट जहाँ पर वही कनेक्टिविटी का नंबर इतने लार्ज स्केल पे पहुँच चुका है, वहाँ पर जो बिज़नेस अपॉर्चुनिटी थी पोटेंशियली कि यार अब डिजिटल इज़ गोइंग टू चेंज द वर्ल्ड, वो हमने उस स्पीड पे होती हुई नहीं देखी. टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट व्हाई यू थिंक कि वो स्पीड स्लो रही है. एंड देन ऑल्सो आई नो दैट यू गाइज आर रियली नाउ वर्किंग हार्ड ऑन द पॉजिटिव एस्पेक्ट. इंटरनेट तो सबके पास है, बट इंटरनेट इज़ अ मीन्स टू एन एंड. How can, particularly in this economic condition, how can you utilize internet to actually generate revenue for yourself and the country through freelancing and a lot of these sort of digital services जो कि पोस्ट कोविड वर्ल्ड में अब आप पाकिस्तान से बैठ के बड़े आराम से कर सकते हैं. थैंक यू. एक्चुअली ये सबसे बड़ा मसला है हमारा. आई एब्सोल्युटली थिंक वी आर टू स्लो एज अ कंट्री. इस वक्त मुल्क के बाद ही आई डोंट नो 230 मिलियन होएगी, 240 मिलियन, जो मर्जी नंबर है. जिस तरह आपने कहा कि 90 मिलियन इंटरनेट यूज़र्स हैं, यार ये थोड़ी सी ना मुझे कभी कोई शर्मिंदगी आती है इस नंबर पे. दिस शुड बी 160 मिलियन, 170 मिलियन. हर बंदे के हाथ में ना ये चीज़ होनी चाहिए, बिकॉज आई थिंक ये चीज़ लक्जरी नहीं है. तो अब आगे बात लक्जरी की. जब तुम इस्तेमाल करो ये अल्फाज इस मुल्क के अंदर तो हमारी अथॉरिटीज़ के कान खड़े हो जाते हैं और वो रेवेन्यू और टैक्स पे फोकस लगाने लग जाते हैं. ठीक है, टैक्स करो,
पर लेकिन इस वक्त जो टैक्सेशन पॉलिसीज़ है ना हमारे मुल्क में, वो काफ़ी रिग्रेसिव हैं और वो इस चीज़ को इनेबल को ना नहीं करने दे रहे. एज एन एग्जांपल, हर रिचार्ज के ऊपर विद होल्डिंग टैक्स है, और जब आप तुम इस्तेमाल करो तो GST है. घुमा के मैं ख्याल है 40% तक आपका जो है वो टैक्स पे चला जाता है. तो अब सोचो, एक बच्चा पढ़ना चाहता है विकीपीडिया के पेज के ऊपर, तो वहाँ पे 40% टैक्स लग गया. उसने एक पेज खोला तो उसको 40% टैक्स लग गया. आप लाइब्रेरी में जाओ ना, दो ना 40% टैक्स वहाँ पे किताब को देखने के लिए. सो सबसे बड़ा मसला ये है कि हमने ना जो डिजिटल पॉलिसीज़ हैं वो इवॉल्व नहीं की जिस तरह हमने करना चाहिए था. एक छोटा सा नंबर है, और ये GSMA की अपनी वेबसाइट के ऊपर है. हर 10 परसेंटेज पॉइंट्स की इंक्रीज ऑफ पेनिट्रेशन ऑफ इंटरनेट तुम्हारी GDP के ऊपर 1% अप टू 1% इम्पैक्ट होता है. अब इन आवर केस क्या हुआ, $3.5 बिलियन का इम्पैक्ट है. सो ये तो थोड़ा सा मैंने जो एस्टिमेट किया हुआ है, जो हम 75% तक ले जाएं तो $10 बिलियन हमारी इकोनॉमी पे आ सकते हैं. इस वक्त हमारे मुल्क की सूरत हाल है कि हमें इतने पैसों की ज़रूरत है, तो ये पैसे आ सकते हैं. इट्स नॉट कि ये पैसे नहीं आएंगे, ये आएंगे यार. ये इनेबलर है, ये इंटरनेट से नहीं आएंगे, पर लेकिन जो इंटरनेट पे आप करोगे बाद में उन चीज़ों से आएंगे. ये चीज़ें बनेंगी, हमारे एंटरप्रेन्योर्स आगे जाएंगे. हमारे जो यंग स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे नस से जो निकल रहे हैं, यूनिवर्सिटियों से जो निकल रहे हैं, वो यही चीज़ कर रहे हैं, कंप्यूटर साइंस की डिग्रीज़. तो ये चीज़ें बनेंगी. तो एक चीज़ ये है कि जो टैक्सेशन पॉलिसीज़ हैं ना वो क्वाइट रिग्रेसिव है. सेकेंडली, वो जो हैंडसेट्स के ऊपर भी अनफॉर्चुनेटली मैं थोड़ी सी बात करूँगा. हमें 30 साल हो गए मोबाइल इंडस्ट्री के अंदर. पिछले 2 या 3 साल में पॉलिसीज़ आई हैं जहाँ पे इन्होंने हैंडसेट्स को इनेबल किया इस मुल्क के अंदर. As a population, as a big country, as the 5th most popular country in the world, 65% of our population are 25. We should have been building handset assembly long time ago and stopping imports. अब अल्लाह का शुक्र है ये हो रहा है. However, जो taxation है वो still on handsets is too high. That's a big problem. क्योंकि इस मुल्क में iPhones तो assemble नहीं हो रहे ना, तो ये नहीं आ सकता इस मुल्क के अंदर. तो taxation is too high. However, we need more local manufacturing and more local development. 30 साल में हम अभी तक SIM कार्ड नहीं बना सके. सिम कार्ड आज तक हमारा इंपोर्ट होता है? नहीं, मैं सब इंपोर्ट करता हूँ. See, it's very simple. मैं जो समटाइम्स फील करता हूँ कि मैं यहाँ से निकलूँ तो चिप्स के ऑर्डर करूँ तो मैं खुद ही यानी कि नॉर्मली लोग आते हैं कहते हैं यार इकोनॉमी ऑफ स्केल का मसला है. यार इसमें तो इकोनॉमी ऑफ स्केल भी है आपके पास. स्केल भी है. एक चीज़ है, 4-5 बायर है, उसने एग्जैक्ट सेम चीज़ जाके मिलियंस को बेचनी है. हमने पॉलिसीज नहीं बनाई ना, तो किसी को एनेबलमेंट नहीं कराया हुआ, तो नहीं बना. So this is the and then I'm shook. Then linked to this, then this actually holds us back as a country. हम too dependent हो जाते हैं हर चीज़ को ना import पे. Not only that, मैं again embarrassed हूँ इस वक्त because of the taxation recently. 2G के फ़ोन्स मेरे नेटवर्क पे ज़्यादा आ रहे हैं निस्बत से 4G से, बिकॉज 2G की प्राइस बेहतर है. मेरी जो राय है यहाँ पे वो ये है कि आई थिंक हमें 2G बंद कर देना चाहिए. मूव एवरीबडी टू डेटा. गवर्नमेंट के सारे जो एक जो चीज़ मैंने की थी सेनेगल में, ये है 2013 में. आई डिड दिस इन सेनेगल. आई वर्क विद द गवर्नमेंट एंड मैंने सारे गवर्नमेंट के पोर्टल्स ऑनलाइन करके उनको फ्री ऐप बना के उनके फ़ोन्स पे लगा दिया था. तो किसी को गवर्नमेंट के इदारे में नहीं जाना पड़ता था. वो सारा काम अपने वॉलेट के ज़रिए, सारे गवर्नमेंट के काम, चाहे वो टोल था या वो उनका ID कार्ड था या ड्राइविंग लाइसेंस था या पासपोर्ट था या वीज़ा एप्लीकेशन, मैंने हर चीज़ उनके अपने ऐप में. वो मुल्क थोड़े छोटे थे, 12-13 मिलियन की आबादी है, तो मे भी हो सकता है, बट लेकिन ये मैंने कर दिया था. नहीं, लेकिन वही वाली बात है ना कि अगर आप आइसोलेशन में लेकर आए, मैं कहता हूँ यार आप 22 करोड़ की या 24 करोड़ की आवाम के लिए ना करें, आप इस्लामाबाद, लाहौर, कराची से शुरू करें. आपके पास भी वो एक छोटी सेगमेंटेड ऑडियंस आ जाएगी. सो आई फुली एग्री विद यू, लेकिन अनफॉर्चुनेटली समटाइम्स ना navigating these corridors takes too long. And then government change हो जाती है, and then I have to start again. Unfortunately, do you also think in certain areas जहाँ पर बाकी कंट्रीज़ में हमने देखा कि ये स्विच तेज़ी से आया, उसमें जिस तरह फिनटेक की बात करें हम, तो I was speaking to someone who actually coincidentally was part of JazzCash not too long ago, but now I think he's with MasterCard.
up until very recently. He was with MasterCard and then he moved to JazzCash. Yeah, and then he's now left. Yeah. And so he was telling me about how, you know, there's only enough that a player like a mobile wallet or a digital bank can do. उसमें आपको बहुत सारी regulations थी, उसमें वो underlying rails थी जो कि अब शायद आना शुरू हो गई हैं, जिसकी वजह से अब हम शायद देखें कि थोड़ा स्पीड में अपटेक आएगी जो कि पहले हमें नहीं नज़र आई. डू यू थिंक वो भी रीजंस थे? पॉलिसी और रेगुलेशन सबसे बड़ा है. एंड एक्चुअली फोकस हमारे ऊपर भी होता है कि एज अ प्रोफेशनल मुझे इस इंडस्ट्री के बारे में सब कुछ पता है. अब मेरा काम ऑल्सो बनता है कि मैं इस रेगुलेटर को भी सपोर्ट करूँ, उसकी हेल्प करूँ. पर रेगुलेटर का भी काम बनता है कि मेरी मशवरा लें मुझसे और मेरी राय लें कि मैं ये कैसा करना चाहिए. तो ये रिलेशनशिप सिम्बायोटिक होनी चाहिए, वन वे स्ट्रीट नहीं बन सकती. अक्सर जो मैंने देखा है यहाँ पे हो जाता है एंटेगनिस्टिक सिलसिले की वजह से ना चीज़ें आगे नहीं जाती. ट्रस्ट डेफिसिट है, बहुत बड़ा ट्रस्ट डेफिसिट हो जाता है. हाउएवर इस मुल्क में बैंकिंग पेनिट्रेशन तो है ही नहीं. आई कैन नॉट सी अ बिगर अपॉर्चुनिटी देन टू गिव एवरीबडी फाइनेंशियली इनेबल्ड. जितने आप ज़्यादा लोगों को फाइनेंशियली फ्री करोगे ना उतना वो ज़्यादा मुल्क के लिए करेंगे. And it might seem like a very boring thing कि यार अच्छा लोगों को बैंकिंग में ले आओ, there's so much other things, but I feel like that is the core layer. That is where it all starts. You want to do anything आगे, वो जिस दिन आपने लोगों को बैंकिंग में ले आए और एक फॉर्मल फाइनेंशियल सिस्टम में ले आए, उसके बाद आपने अपनी जो टैक्सिंग के प्रॉब्लम है, उसके आगे अपॉर्चुनिटी की बात आती है, ई कॉमर्स की बात आती है, हज़ार चीज़ों की बात आती है, वो सारे सॉल्व होना शुरू हो जाएंगे. आई हैव 2 वॉलेट्स. मेरी एक बहुत बड़ी सी वॉलेट है जो मैं यहाँ पे रखता हूँ जिसमें कैश पड़ा हुआ है. राइट. और एक मैं जब यूके जाता हूँ छोटी सी बहुत पतली सी वॉलेट है जिसमें 2 कार्ड होते हैं. इनफैक्ट मुझे उनकी भी नहीं अब नीड, क्योंकि वो फ़ोन में आ जाते हैं. बिकॉज में फ़ोन में आ जाता है वो एप्पल पे. राइट. कितना फ़र्क पड़ गया बंदे की दुनिया के ऊपर. एंड आई थिंक जो ये चीज़ें यहाँ पे इनेबल होंगी ना तो ज़्यादा लोग फाइनेंशियली फ्री हो जाएंगे. अभी भी मैं किसी रेस्टोरेंट में जाऊँ थोड़ी सी नर्वसनेस होती है जब मैं पूछता हूँ कि तुम्हारी कार्ड वाली मशीन चल रही है. पूछना पड़ता है. टैप एंड पे तो दूर की बात है पूछना पड़ता है कि आपकी मशीन चल रही है. बिकॉज उनकी मशीन भी नहीं चल रही होगी, उनके पास शायद मशीन हो भी ना. सो दिस इज़ अनफॉर्चुनेट, दिस इज़ वेरी वेरी अनफॉर्चुनेट एंड दिस डजंट हेल्प द इकोनॉमी. हाउएवर दिस विल हेल्प इंडिविजुअल. सो कोई बंदा किसी रूरल एरिया में डोमेस्टिक काम कर रहा है, अपने ओन कॉटेज इंडस्ट्री बना के अपने कपड़े शॉल्स बेचना चाह रहा है, यू कैन इनेबल दम कि शॉल्स बेचो, इंस्टाग्राम का पेज सेटअप करो, कराची में भेज दो, कराची से पैसे भी आ जाएंगे. वरना वो तो लिमिटेड थे ना अपने. सो मैंने अक्सर एक मेंटरिंग की थी एक ऐप की. वो चाह रहे थे कि हम हुंजा में चीज़ें वो बनाते थे, उनके जो आर्टिसंस होते हैं ना चीज़ें बनाते थे हुंजा में, पर लेकिन वो बेच नहीं सकते थे. तो वो पूछ रहे थे कि हमें वेबसाइट बनानी है, क्या करना है. तो मैंने उनको ना मेंटरिंग दी थी. तो वो यंग ग्रेजुएट्स, मैंने उनको मेंटरिंग दी कि वो कौन सी चैनल्स इस्तेमाल करें और वो कैसे जैज़ कैश से पैसे कि है कस्टमर को पैसे ट्रांसफ़र कर दो मुझे, मैं तुम्हें गुड्स भेज दूँगा. एंड रियली दिस देन फाइनेंशियली उनको फ्री कर दिया आपने हुंजा में. उनकी खुद अपनी इनकम होगी, अब वो हुंजा फ्लरिश करेगा एज अ रिजल्ट ऑफ दिस. सो दिस इज़ सो इम्पोर्टेंट. आई थिंक इंटरनेट एक्सेस लिंक्ड टू फाइनेंशियल फ्रीडम. I do not think these are luxuries. I think gas, electricity, telecoms, I think this is essential for existence. टेल मी अ लिटिल बिट अबाउट जो मैंने आपसे दूसरा सवाल पूछा था कि पाकिस्तान में आज मैं इकॉनमी को देख रहा हूँ, हालात बहुत ख़राब हैं और कंटिन्यूसली हम ये बात करते हैं कि पाकिस्तान में एक करंट अकाउंट डिफिसिट का प्रॉब्लम है, पाकिस्तान में डॉलर का प्रॉब्लम है. डॉलर के प्रॉब्लम की वजह से ज़ाहिर है थोड़ी देर पहले भी यू टच्ड अपॉन द फैक्ट दैट वेयर एन इम्पोर्ट लेड इकोनॉमी एंड वेयर अ कंजम्पशन इकोनॉमी. एंड सो एट वन पॉइंट वन माइट थिंक यार ये तो बड़ा बैड सीन है, हमारा तो कोई फ्यूचर नहीं है. बट ऑन एन एंटायरली डिफरेंट पॉइंट यू रियलाइज कि वन ऑफ द बिगेस्ट इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन and one of the largest young population, you have an incredible opportunity to connect with the world. Now, post-COVID, the world realized that you don't have to physically be at places to work. आप जो है वो दुनिया में कहीं से भी बैठ के as long as आप काम कर रहे हैं, आप वैल्यू जनरेट कर रहे हैं, you're good.
And in a lot of ways, when you talk about that same value in emerging economies, वहाँ पर आपको comparatively बहुत सस्ता पड़ता है. So there is a inherent capitalist opportunity there as well, जहाँ पर वो flow of capital आपकी तरफ आ सकता है. इसके अंदर जाहिर है जो हम जिस चीज़ को देख रहे हैं वो क्या है कि जो कोर पे बैठी है इंटरनेट. Internet is what connects you. Internet is where you learn the skills, where you sell the skills, and so on and so forth. And I know that Jazz has been very vocal about freelancing recently. What's the thought behind that? Again, honestly, it's such a big opportunity. आप देखो हमारा population कितना है, हमारे पास universities कितनी है, हमारे graduates कितने हर साल पढ़ लिख के universities से available हो रहे हैं. Number one. So we have the manpower. We have the talent. Next चीज़ है, I think COVID ने सिखा दिया हम सबको, some work, not all, can be done remotely. Okay? हमारा भी काम काफ़ी रिमोट होता है. मुझे कोई पता नहीं कि इस वक्त कराची में क्या हो रहा है, पर लेकिन काम चल रहा है. कोई ना कोई बंदा है वहाँ पे. हमारे सप्लायर्स अक्सर इंटरनेशनल लेवल्स पे होते हैं, तो मुझे नहीं पता वो कहाँ बैठे हुए सिस्टम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं मेरे लिए. सो दिस इज़ अ बिग अपॉर्चुनिटी. एंड जितनी ज़्यादा हम इंडिविजुअल्स को इनेबल करेंगे ना, वो एक्चुअली इकोनॉमी को डिलीवर करेंगे, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन डालेंगे. आई थिंक द फ्रीलांसर इकोनॉमी is enormous potential for this country. I know I read a wonderful stat recently. India has more IT graduates than the working population of Netherlands every year. Really? Yes. So my head office is in Netherlands. मैं इसलिए Netherlands को इस्तेमाल करता हूँ. India has more IT graduates every year coming out than Netherlands has workers. अब ये सोचो, ये मैन पावर है, ये ह्यूमन रिसोर्सेज है, ये कहीं से भी काम कर सकते हैं. एंड दिस नीड्स टू बी रियली इंकरेज्ड, बिकॉज जितना आप इंडिविजुअल को एम्पावर करोगे, वो एक कम डिपेंडेंट है तुम्हारे ऊपर. प्लस वो शायद इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करे, 2 बंदों को और हायर कर लें, एक ऑफिस ले लें, कहीं रेंट दे दें, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट करेंगे. And I am a big believer of this area. For example, you could actually freelancers की websites हैं, काम ढूंढो, डिज़ाइन लोगो किसी को चाहिए, कोई नई स्टार्टअप है उनको लोगो चाहिए, या यूके के, मुझे पता है यूके की रेट्स क्या होती हैं, बिकॉज यूके की इकोनॉमी डिफरेंट है, फ़र्क है. वहाँ पे इंडिविजुअल्स की कॉस्ट ज़्यादा होंगी, हमारी कॉस्ट कम है. तो इंडिविजुअल्स यहाँ पे इक्वली टैलेंटेड है वहाँ की तरह, लेकिन जो कॉस्ट है वो सिग्निफिकेंटली लोअर है. Encourage that behavior. Encourage and reward it so that more people realize I can do this. Yeah. The more that do it, the more you will flourish. I think सबसे बड़ा important factor इस point पे तो ये है कि masses को ये realize कराना कि यार ये भी काम हो सकता है. ये जो है ना कमाई को डिजिटल कमाई करना, कि you can sit in front of a laptop, you can be in your room potentially, and you can earn money. I think for a lot of people that's just like यार ये that's like a dream, right? So actually अक्सर ना हमारे इल्म में नहीं होता है, but digital कमाई I think is going to be so big for us going forward, especially when I look at Europe, जिस तरह वो evolve हुआ है. अब 2 चीज़ें हैं यहाँ पे, यार वो यूरोप है, गोरे हैं, वो अलग है, या oh my God वो चीज़ यहाँ पे हुई 23 करोड़ 24 करोड़ की आबादी के लिए. वहाँ पे छोटे छोटे मुल्क हैं, बहुत छोटे मुल्क हैं, नेदरलैंड्स, बेल्जियम, लिechtenstein, स्विट्ज़रलैंड, इनकी आबादी तो कराची के बराबर होएगी इन सारों की, और उनकी वर्किंग पॉपुलेशन भी तो कम हो रही है. और ये पूरी आबादी मैंने बताई है उनकी, और उनकी तो डेमोग्राफिक्स बहुत फ़र्क है. उनकी वर्किंग पॉपुलेशन कम हो रही है. दे नीड पीपल टू वर्क. देयर ऑल्सो, आपने स्टार्ट में तस्करा किया कि दे आर नॉट वेरी ओपन टू कि जहाज़ में टिकट कटा हुआ आ जाओ. एंड सो देयर इज़ इनक्रेडिबल अपॉर्चुनिटी फॉर पीपल सिटिंग हियर and being able to take some part of that work and be able to earn for themselves and in fact, the country. On a Jazz level, I have a huge issue on retention of employees to this, because actually वो realize करते हैं कि हम ये काम as a freelancer भी कर सकते हैं. And actually I don't mind it. So many of my guys resign, freelance for me, freelance for others, and they earn more money and they work remotely. You know, मुझे नहीं चाहिए कि हर रोज़ एक मेरा एम्प्लॉई आए, टेबल पे बैठे, जैकेट उतार के पीछे लगा दे चेयर के,
और काम करे. No. ये था ऑब्जेक्टिव, ये थी डिलीवरी, इस डेट पे आनी चाहिए, काम अच्छा होना चाहिए. Where you're working is irrelevant. Yeah. That's the difference of internet. Yeah. I think एक और अगर मैं इसमें एक एलिमेंट ऐड करूँ, पाकिस्तान में जो आपकी 51% पॉपुलेशन है, पाकिस्तान में कहा जाता है ना प्रोडक्टिविटी बहुत कम है. उसका एक लार्ज रीज़न ये भी है कि जब हम बांग्लादेश से कंपेयर करते हैं, फॉर एग्जांपल दे हैव अ लॉट ऑफ वेमेन पार्टिसिपेशन इन द वर्क फोर्स. अब आई एम नॉट गोइंग टू गेट इनटू दैट डिस्कशन. कल्चरल रीजंस होते हैं, बहुत सारे और रीजंस होते हैं, बट द फैक्ट इज़ यू हैव अ ह्यूजली एजुकेटेड female audience that is not part of the productive environment, and their only reason for doing that is because they're unable to get out of the house. And for me, I feel like there needs to be a very specific push towards that demographic कि वो आएँ और आके डिजिटल कमाई की तरफ आएँ. बिकॉज एक तो वो है ना कि यार मैं कह रहा हूँ कि एग्जिस्टिंग बंदा है, कुछ भी कर रहा है, मैं उसको अप स्किल करूँ और उससे कहूँ डॉलर बेस्ड डिजिटल कमाई पे आ जाओ. बट एक वो है जो कि ₹0 इनकम के ऊपर है और वो इस वक्त ज़ीरो प्रोडक्टिविटी के ऊपर है, बट दे आर हाईली एजुकेटेड. मैं बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स को जानता हूँ जो घर बैठे हैं इस वक्त, वो नहीं कर रही. बट अब तो ई हेल्थ की इतनी सर्विसेज आ गई हैं कि आप दुनिया भर में बैठ के जो है ना यू कैन बी एडवाइजर्स एट द वेरी लीस्ट. चले लाइसेंसिंग के मसले होते हैं जो भी. तो in terms of women empowerment, I think there's a great opportunity there as well. Fully agree with you, and this is something we've been working on because I want female empowerment on financial inclusion and on internet inclusion. अभी भी इंटरनेट के ज़रिए ना ऑफ कोर्स 90-100 मिलियन जितने भी कस्टमर्स हैं, जब मैं अपना डेटाबेस खोलता हूँ तो उसमें कोई 75% मेल होता है. अगेन मेरे जैज़ कैश पे मेजॉरिटी मेल होते हैं. ये भी हो सकता है कि उन्होंने अकाउंट खोल के अपनी बेगम या बच्चे या किसी को दे दिया, विच इज़ फाइन, बट लेकिन इन्वॉल्वमेंट नहीं होती इकोनॉमी के अंदर. यू कैन नॉट मूव फॉरवर्ड अनलेस यू वुमेन आर साइड बाय साइड, टू कोट द फाउंडर ऑफ पाकिस्तान. 100%. Yes, you have to include them in everything. They have to be empowered. There is nothing wrong with that. थोड़ा सा मुझे जैज़ के बारे में बताएं कि sure we see the telecom business and we see the internet business or the data business. On top of that, we're also seeing now very मतलब वो बड़ा clearly नज़र आ रहा है जैज़ कैश ब्रांड साथ कनेक्टेड है. But I know that you guys have a lot of other verticals as well. What all are you involved in? And when you say you're a digital business now, what does that entail? So we have the core business. Core business में यह है कि we have voice, we provide data. इसको मैं कहता हूँ access दे दिया. Then what we have is sub verticals where we provide more. Customer करता क्या है जब phone लेता है? Nobody buys the phone just to take photographs. They are wanting to upload them. So we've got a very big fintech product, Jazz Cash, जहाँ पे हमने customers को enable कर दिया कि वो financial transactions कर सकें. वो तो काफ़ी अरसे से चल रहा है, पर more recently हमने launch किया हुआ है अपना TV product, तमाशा. तो इसके ऊपर भी अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी कस्टमर्स आ चुके हैं. इस वक्त मैं शायद डिस्क्लोज नहीं कर सकता, पर काफ़ी कस्टमर्स आ चुके हैं. आई बिलीव फुटबॉल का वर्ल्ड कप भी मैंने उसी पे देखा था. उस पर फुटबॉल का भी वर्ल्ड कप है, इस वक्त क्रिकेट की सीरीज़ भी उस पर चल रही है और उसके ऊपर वीडियो ऑन डिमांड टाइटल्स भी हैं जो कस्टमर देख सकते हैं. और इस वक्त हमने इसके ऊपर एक्सेस अलाउ किया हुआ है कस्टमर्स के लिए. तो ये भी एक हमारा अंडरस्टैंडिंग है कि हम एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करें उन एरिया में जहाँ पे. और एक्चुअली जो मैंने चीज़ देखी है इसके ऊपर, इसी हफ्ते मैंने देखा था, जो सबसे ज़्यादा यूसेज इन टीवी प्रोडक्ट की है वो उन एरियाज़ में है जो हमारे रूरल्स हैं एज अपोज टू द सिटीज़, जहाँ पर कन्वेंशनल केबल नेटवर्क बिछा ही नहीं था. हाँ, जहाँ पे नेटवर्क्स हैं ही नहीं. तो ये इनकी सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट बन जाती है कस्टमर्स के लिए. राइट. सो दैट्स द सेकंड वन. So entertainment product. So TV and content. पर सिर्फ ये नहीं, अभी रिसेंटली हमने लॉन्च किया अपना सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म बिप. राइट. ये हमने एक पार्टनरशिप की है और ये प्रोडक्ट हम ला रहे हैं पाकिस्तान में और अल्हम्दुलिल्लाह इस पे भी कस्टमर्स आ चुके हैं. तो ये एक मैसेजिंग प्लेटफॉर्म है, कंटेंट के साथ न्यूज़, वेदर, स्पोर्ट्स और एक दूसरे के साथ मैसेजिंग करो. पर सिर्फ ये भी नहीं, ऊपर से हम बाखबर किसान हमारा एक और एप्लीकेशन है जहाँ पे हम किसान को ना उनकी रेट्स और वेदर और मार्केट्स के बारे में ना तफसील दे देते हैं, तो उनको ये भी उनके लिए बेनिफिट हो सकता है. पर सिर्फ ये भी नहीं, हमने अभी रिसेंटली एक और चीज़ लॉन्च की थी, वो था जैज़ मुसाफिर. ये एक कोशिश कर रहे हैं थोड़ा सा ट्रैवल जी.
Airbnb ऑफ पाकिस्तान, ट्रैवल, थोड़ा सा अभी एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं कि प्रोडक्ट को ठीक करें, पर लेकिन ये हमने शुरू किया है कि ना आपने हुंजा जाना है, मरी जाना है, तो इसके ऊपर भी ना आप अपना होटल, टैक्सी कुछ भी चेक कर सकते हो. सो काफ़ी हमने एप्लीकेशंस लॉन्च किए हुए हैं. सिर्फ ये भी नहीं, एक डिस्काउंट बाज़ार हमारा प्रोडक्ट है जो रियली आई थिंक KLI में चलता है इस वक्त, जहाँ पे हमने रेस्टोरेंट्स के साथ ना एक काइंड ऑफ वाउचर सिस्टम लगाया हुआ है. राइट. तो आप जाओ देखो रेस्टोरेंट में ना, बाय वन पिज़्ज़ा गेट वन फ्री सिलसिला होता है. तो हम ये ना आप कोशिश कर रहे हैं कि कस्टमर्स को वो चीज़ें दें जो अपने वो फ़ोन पे करते हैं, बियॉन्ड न्यूज़, वेदर और स्पोर्ट्स, और कहाँ पे वो यूटिलिटी ला सकते हैं. ठीक है. Tell me a bit about B2B. Are you there as well? Are you providing services to so we are the companies biggest. as well? We are the biggest. Jazz is the biggest provider of business solutions in this country. I think stock exchange की 900 top में से 96 हमारे customers हैं. ठीक है. So we have all the big customers in Pakistan. But सिर्फ connectivity नहीं होती business की need, उनकी तो hosting services, cloud services, security, tracking products. और B2B में एक्चुअली इत्तेफाक से ज़्यादा इनोवेशन है, क्योंकि B2B की डिमांड्स काफ़ी ज़्यादा है. सो B2B में हमारा इनोवेशन काफ़ी आगे चल रहा है. और अभी रिसेंटली हमने अपना लॉन्च किया था गरज, विच इज़ अ क्लाउड. हमने अपना नाम दिया उसको. हम कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ों को ना लोकलाइज करें. Right. And in terms of, I know for a fact that you guys have a very strong data science team. I remember, मेरी अपनी by education, I'm a data analytics person, and you know, back in the day when I was working at Teradata, तो मुझे याद है कि बड़ा बंदा कन्वर्ट होके जाता था. उस वक्त वो data science की team early on बन रही थी. But you got some of the top talent there. So, and first of all, मैंने यूनिवर्सिटीज़ के साथ डील की हुई है. All first class mathematics graduates को मैं guaranteed job दूंगा to come and work with us. Data science is vital for me. I need to know what the customer is doing so that I can develop things to serve and make their needs easier. अच्छा, as an example, मेरे डेटा साइंटिस्ट को कोई पता नहीं होता कि ये मोबाइल सर्विस क्या है, 4G क्या है, 3G क्या है, उनको कोई इंटरेस्ट भी नहीं. पर लेकिन मैं उनको एक प्रॉब्लम दे देता हूँ कि मुझे बताओ कितने लेफ्ट हैंडेड कस्टमर्स हैं जो यहाँ पे सड़क क्रॉस करेंगे. आई डोंट नो इफ दैट्स यूजफुल फॉर मी, बट दे कैन डू इट. And I get them to build me data science models to be able to predict future customer behavior. It is a little bit of an art as much of a science at the moment. yeah. But it is an art, and my data scientists love it because what do I have? I have an abundance of data. Actually, मेरे पास इतनी data है. You don't know what to do with it, to be very honest, at this point. मैं ना पूरा दिन उनको लगा दूँ ना, तो वो पूरा दिन उसके साथ खेलते रहेंगे. But that's the beauty of it right now, right? कि if a company is progressive enough to realize that, it's in the research phase right now. Yeah. But I feel like that's the future. That is the product. So let me give you one little bit of consulting work I did with a bank. I helped them to understand कि उनकी branches किधर होनी चाहिए. Specifically, इनिशली ये प्रोजेक्ट किया था हमने कराची में. हमने उनको दिखा दिया था थ्रू आवर डेटा साइंस मॉडल्स कि, एंड आई टेल यू वेयर आई गॉट द आइडिया फ्रॉम. हम ये डेटा साइंस इस्तेमाल करते हैं लगाने के लिए कि नेटवर्क किधर लगेगा. सो नेटवर्क के ऊपर कहाँ लगना चाहिए नया नेटवर्क. तो मैं ऑब्वियसली लैंड मास, सैटेलाइट इमेजरी, सब कुछ, नाइट लाइट्स, सब कुछ मैं देखता हूँ. कस्टमर नंबर्स देखता हूँ, कस्टमर कितने हैं, किधर हैं, क्या पॉपुलेशन है, क्या सड़कें बन रही हैं, क्या हो रहा है. ये सारी डेटा हम डाल देते हैं तो हमें पता चलता है कि हम नेटवर्क किधर लगाएं. Then I thought, why can't I do that for retail? Tell them where they should have their milk. Where should the tea? Distribution plants किधर लगने चाहिए. Distribution plants किधर लगने चाहिए. किधर बैंक की ब्रांच होनी चाहिए. कौन सी बैंक की ब्रांच ज़्यादा पॉपुलर होएगी, कौन सी कम पॉपुलर होएगी. And we've been using this information just to help other industries. I can also use this information to help advertisers. कि आपको कौन से apps के ऊपर अपना advert लगानी चाहिए. I can provide that information. मुझे पता है customer क्या कर रहा है. Is he on Facebook? Is he on Instagram? Is he on WhatsApp? I can tell, and then I can help you to figure out where you should advertise. So as Jazz, we are the digital enabler. We are vital for this country. We are the door for digital Pakistan.
We are that door. We want people to come through it. We want to help. And we need a lot of support to be able to build a local brand, Pakistani brand, Ijaz. So we need to build this in here. Tamasha is a local brand. Garage is a local brand. Bajao, I believe it's Bajao as well. जी हमारा music application. Bajao. I missed it. We're at TBT is at Bajao as well. So if you guys use the application, you can listen to all our episodes there as well. Yes. So yes, ये सारी चीज़ें local हैं और हमने इनके ऊपर ना ये उर्दू के अल्फाज लगाए हुए हैं because we want to show localization. And then we get into I need more content, I need more things on these things, I need more policy. Right. इसको मैं थोड़ा wrap up की तरफ लेके जाऊँगा, but early on you mentioned taxation policy, and obviously being the chief commercial officer, आपके लिए business case is supreme, right? इसके अंदर मैं दो चीज़ें आपसे probably दो angles पूछूँगा. पहला angle होगा 5G. Everybody talks about it. It's the talk of the town, and constantly question ये आता रहता है कि 5G में chicken and egg problem है. Do you invest in the hardware infrastructure and get the customers, or do you get enough customer interest and then begin to put in the hardware, and then जहाँ पर आप वो सोच ही रहे होते हैं तो फिर वो दूसरा एंगल आता है कि जो आपका इस वक्त इकोनॉमिक क्राइसिस हिट कर गया है, जिसमें द रेवेन्यू इज़ गोइंग डाउन. ज़ाहिर है बाइंग पावर जैसे जैसे कम हो रही है उसी हिसाब से एक एंगल ये कहता है कि ज़ाहिर है जो डिजिटल सर्विसेज हैं और ये सारी चीज़ें हिट लेंगी. मैंने आज एक्चुअली एक बड़ी इंटरेस्टिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट पढ़ी अबाउट ऑफ दिस इन्वेस्टमेंट फर्म बेस्ड आउट ऑफ द US. अच्छा, उन्होंने बड़ा मज़े का उन्होंने कहा जी वी आर गोइंग लॉन्ग ऑन डिजिटल सर्विसेज बिकॉज जैसे जैसे लोगों के पास पैसे कम हो रहे हैं दे आर गोइंग टू बी इन्वेस्टिंग ऑन डिजिटल फार मोर than they were previously, and for me that was very insightful. उन्होंने उसकी तशबीह भी ड्रॉ की with 1929 recession, the depression actually, and they said कि जहाँ पर डिप्रेशन में बहुत सारे बिजनेसेस वाइप आउट हो गए वहाँ पे सिनेमा एंड फिल्म बिजनेस बूम्ड ओवर द नेक्स्ट डेकेड. कि जहाँ पर लोगों के पास बहुत कम पैसे थे, एंटरटेनमेंट महंगी एंटरटेनमेंट वो नहीं ले सकते थे, तो जहाँ पर उनको सस्ती एंटरटेनमेंट मिली फिर वो उस तरफ गए. एंड दैट इंडस्ट्री रियली, अगर उस इंडस्ट्री का आप ओरिजिनली देखें तो हॉलीवुड became Hollywood after the Great Depression. Very interesting insight. But how do you see the current financial crisis and also overall पाकिस्तान के अंदर जब आप एज अ टेलीकॉम ऑपरेटर वाला जो हैट पहनते हैं और उसमें बात होती है विद 5G, क्या हम वही करेंगे कि दुनिया जहाँ पे जाएगी हम 5 साल बाद आहिस्ता आहिस्ता तैरते उधर फॉलो करेंगे, या शायद कोई इसका सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है जिसमें हम दुनिया के साथ शोल्डर टू शोल्डर खड़े हो सकते हैं? सो बहुत सिंपल सा जवाब यह है, सोल्यूशन है. यहाँ पे अनफॉर्चुनेटली टेलीकॉम्स को देखा जाता है उस नज़र से कि ये गवर्नमेंट के लिए रेवेन्यू जनरेट करेंगे. विद होल्डिंग टैक्स एट 15%, GST एट 19.5%, तो वो इमीडिएटली सोचते हैं कि मैं कस्टमर की जेब से 40% निकाल लूँ. दैट डजंट हेल्प बिकॉज ये लॉन्ग टर्म को किल कर देता है. सेकंड चीज़, हमें स्पेक्ट्रम चाहिए. हम कभी नहीं कहेंगे कि हमें स्पेक्ट्रम ना दो. इस वक्त गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ के मुताबिक 5G स्पेक्ट्रम इज़ अनअचीवेबल ऑन द करंट प्राइस. मुझे वो स्पेक्ट्रम मोरेटोरियम दे दें, आई विल लॉन्च सर्विसेज ऑन 5G एंड आई विल मेक 5G इनेबल. देयर इज़ दैट स्टोरी, राइट? बिल्ड इट एंड दे विल कम. मेरी ओपिनियन है 5G को हम इग्नोर नहीं कर सकते, आएगा. सर्विसेज आएंगी, हमारी कोई अलग DNA नहीं है, हम भी वही इंसान हैं जो यहाँ पे क्यू नहीं करेंगे पर लेकिन दुबई में जाके खड़े होकर सीधे क्यू में खड़े हो जाएंगे. इसका मतलब हम कर सकते हैं. सो वी हैव ऑल ऑफ दीज अपॉर्चुनिटीज़ इन दिस कंट्री, नो इश्यू व्हाटसोएवर. बट व्हाट वी लैक इज़ द रेगुलेशन एंड द पॉलिसी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, इन ऑर्डर टू गेट 5G, आई एम हैप्पी टू, हमने ऑलरेडी नस्ट में 5G की लैब लॉन्च कर दी है एंड वो एप्लीकेशंस बना रहे हैं. ओवरऑल जो 5G का मसला है ना, 5G इज़ नॉट जस्ट अबाउट द स्पीड, इट्स अबाउट द एप्लीकेशंस. एंड अनफॉर्चुनेटली वो जो एप्लीकेशंस चलेंगे 5G के ऊपर वो अभी तैयार नहीं है. सो एक चीज़ तो ये है, देयर इज़ अ लैग. अभी दुनिया में ये एप्लीकेशंस नहीं आई हैं. सो ये ड्राइवरलेस कार्स, ये रिमोट ऑपरेशंस, ऑटोमेटेड फैक्ट्रीज, इट्स वेरी अर्ली ऑन. तो हमारे मुल्क के लिए ना ऑलरेडी हम काफ़ी पीछे हैं. ठीक है. सेकंड चीज़, जिस मुल्क के अंदर 90% तक 4G पेनिट्रेशन जा चुका है, वहाँ पे मैं, इसका मतलब है हर बंदे के पास स्मार्टफोन है, तो हो सकता है.
यहाँ पे तो 50% के पास अभी स्मार्टफोन भी नहीं है, और मैंने जैसे पहले बताया कि 2G के फ़ोन अभी ज़्यादा बिकने लग गए हैं प्राइस की वजह से. So yes, these can all happen, but unfortunately we need to get working on the policy and the regulation. We need to look at telecoms as a long-term enabler of economic prosperity. If you can get that vision together, then yes, not a problem. Absolutely not a problem. But लेकिन इस वक्त हमारे पास 47 मेगाहर्ट्ज़ का स्पेक्ट्रम है, मुझे कम से कम 100 मेगाहर्ट्ज़ की नीड है 5G के ऊपर. I cannot have the same pricing regime for 5G as I have for 4G. There is no pricing regime. If the pricing regime says we will mirror 4G, then it will not work. Because I will have to spend billions. And so what alternate do you suggest? I suggest a moratorium on spectrum pricing, lowering of taxation, encouraging more freelancers to work from here, encouraging people to become self-sufficient, and greater financial inclusion. Do you think instead of sort of doing a prepaid spectrum auction, the government could potentially launch a pay-as-you-go, where pay-as-you-grow, right? Yeah. कि जहाँ पर टेलीकॉम का ये मसला आ रहा है कि यार मुझे तो पता ही नहीं है कि मेरा इस वक्त कस्टमर कितना रेडी है 5G के लिए, बट जहाँ पर डिस्पैरिटी है, और है डिस्पैरिटी इस मुल्क में, तो एट द वेरी लीस्ट, क्योंकि दुबई कर सकता है 5G लॉन्च, छोटा सा शहर है, वो शहर है वो मुल्क भी नहीं है, राइट? तो एट द वेरी लीस्ट मैं कहूँ कि यार मैं 200 मिलियन 100 मिलियन के जाके स्पेक्ट्रम खरीद लूँ और उसका कस्टमर मेरा सिर्फ जो नया सेक्टर में इस्लामाबाद में बैठा है, डजंट मेक एनी सेंस. तो मैं अभी 5G एटलीस्ट लॉन्च करूँ, मैं एफ सेक्टर में करूँगा या मैं कराची DHA में करूँगा, वहाँ पर कम से कम कंज्यूमर भी आएगा और बिजनेसेस बहुत सारे उसके ऊपर सर्विस डेवलप करना शुरू हो जाएंगे. एंड देन इवेंचुअली अगर मैंने इतना इनेबल कर दिया अर्ली अडॉप्टर को, तो आज से 2 साल बाद शायद वो ज़्यादा रैपिडली स्प्रेड करे वर्सेस नॉट गिविंग देम एनीथिंग एंड देन 2 years later लॉन्चिंग इट. एंड गवर्नमेंट कैन चार्ज a much smaller fee right now for this sort of dedicated launch, and then eventually grow it out as the customer base grows. Do you think that would work? So ये जो आपके 2 paragraphs हैं ना, आप इनको रिकॉर्ड करके ना प्लीज़ मिनिस्ट्री ऑफ IT को this is exactly the solution. I agree with you. This is the solution because actually ना रूरल एरियाज़ में maybe 5G की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे 4G की ज़रूरत है, अभी भी 4G की ज़रूरत है. But yes, more than even Islamabad, Karachi and Lahore, जो especially business hubs हैं, जो business hubs हैं, वहाँ पे yes, I agree with you. So actually होएगा क्या? Facebook बाद में आया था, 4G पहले आया, right? ये जब आप चीज़ बना लोगे ना 5G की, तो एप्लीकेशंस पीछे एंटरप्रेन्योर्स बनाने लग जाएंगे, एंड ये आ जाएंगे यहाँ पे. एंड अनफॉर्चुनेटली जब हम ये चीज़ इनेबल नहीं कर रहे, तो फिर पीछे एंटरप्रेन्योर्स कैसे काम करेंगे? Makes sense. Asif bhai, I'm going to ask you the last question I ask all of my guests and would love your insight on that. We're in 2023 now. Time has passed so fast. Shakes me up. But we're in 2023 now, and you've lived your whole life in the UK, and it's fascinating that you chose to be here at this point in your life. बट जाहिर है कि बंदा आता है तो बंदा उसमें कुछ देखता है, you probably saw an opportunity here, and so if I were to ask you, based on the last 7 years of experience, based on what you know of Pakistan, knowing what you know now, particularly most recently of how things are fairly pessimistic, unfortunately, how do you see Pakistan 27 years from now, in 2050, knowing what you know now, seeing all that you've seen? This is a polarized view. It can be one of two. There will be no middle ground. It will be either very, very economic, prosperous. We have used our population to our advantage. We have encouraged education. We have encouraged greater development of local indigenous products, including digital products. And we're doing very well as a country. We're a 300 million population, and we are a formidable on the world stage. That requires work, and unfortunately I cannot see that work happening right now because we have too much internal conflict between ourselves. We need to put that to one side and work towards a common goal through patriotism.
which is, I think, lacking right now. Everybody is far more interested in tomorrow morning's headlines than they are interested in developing a longer term vision of what would be a beautiful Pakistan. However, honestly, 5th most populous country in the world, fastest growing, youngest population, and I have worked in Africa, fairly well educated population here. This is formidable. We are on the precipice of being on a world stage. Everything is with us, but somehow we are a little bit hell-bent on being able to hold ourselves back. So मेरी जो opinion है, I'm still very optimistic. I have no intentions of leaving. I am still convinced that we can do really, really well. I don't think there is a major problem. I think we have a PR disaster going on around us right now. We have a negative rhetoric that needs to be corrected. Just like we have a negative rhetoric that Muslim equals terrorist, we have a negativity that needs to be shed. And actually, we have so much to live for, so much optimism, such a big consumer market. And not only that, we can develop devices. We can develop things. We can manufacture. No issue whatsoever. And not only that, this new digital world, you just need a laptop and a code, and you can develop and you can launch and be very successful. So we're not even constrained by physical right now. We're in a digital world. So I see lots and lots of hope, but it won't happen by itself. It needs to be enabled. It means people need to do some work. Makes sense. Asif bhai, thank you so much for taking the time out and coming in. And I'm excited to see what Jazz does, in the coming years. I hope ये जो hiccup है, I hope ये minor हो, and I hope this minor hiccup goes away and we're back on track. Thank you so much for coming in. Thank you very much. Thank you so much. And for all of you guys, thank you so much for watching. अगर आपको एपिसोड पसंद आई और दोस्तों यार के साथ जरूर शेयर करिएगा. यूट्यूब वाले लाइक का बटन दबाएंगे, एंगेजमेंट बढ़ेगी, ज़्यादा लोगों तक कॉन्वर्सेशन पहुंचेगी. फेसबुक वाले नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके टीबीटी कम्युनिटी ज्वाइन कर सकते हैं. वहाँ पर हम डिफरेंट फीडबैक भी लेते हैं, गेस्ट रिकमेंडेशन भी लेते हैं, आर्टिकल्स भी शेयर करते हैं. यू कैन जॉइन दैट एज वेल. इसी के साथ साथ यहाँ पर कहीं पर ईजी पैसा, जैज़ कैश, सादा पे आ रहा होगा. इफ यूड लाइक टू सपोर्ट द चैनल, वी एक्सेप्ट एनीथिंग फ्रॉम ₹1 to as much as you'd like. It's the thought that counts. मैं एक दफ़ा फिर से रिपीट करता चलूँ कि दिस इज़ ए स्पेशल एपिसोड कमिंग आउट इन बिटवीन आवर ट्रांजिशन टू द न्यू सीजन विच इज़ गोइंग टू स्टार्ट very, very soon, inshallah. And we have a very, very interesting surprise for you in that as well, as we're going to be scaling up our operations. But anyways, this was Sayyid Muzammil Hasan Zaidi. You are watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one.